Hello, Mataji, you're watching Hornbill TV's Prime Time. Prime Minister Narendra Modi said on Saturday that tribal pride has been an integral part of India's consciousness for thousands of years and the country cannot forget the contribution of tribal society in the freedom movement. Addressing a gathering here on Janjatiya Gaurav Divas, PM Modi said that the tribal pride has been an integral part of India's consciousness for thousands of years and the tribal society has stood at the forefront. One cannot forget the contribution of tribal society in the freedom movement. He further accused the Congress government of neglecting the tribal community during their rule and added that for BJP, tribal welfare has always been a priority. PM Modi said that his government has taken several steps to empower the tribal community. स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने ही अध्याय जनजातीय गौरव और आदिवासी शौर्य से रंगे हुए हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं और आजादी के बाद यह काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के मोह में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग, तपस्या, बलिदान को नकार दिया गया और इसलिए 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था। हमने उस परिस्थिति को बदला क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है, आजादी दिलवाई है। साथियों, आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। उसके पहले नहीं किया गया। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद 10 साल जो कांग्रेस को फिर से काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस मंत्रालय की उपेक्षा की, पूरी तरह भुला दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 2013 में कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण के लिए
कुछ हजार रुपये की योजना बनाई, कुछ हजार रुपये, एक जिले में 1000 रुपये से काम नहीं होता है। हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत बड़ी वृद्धि की, उसके हितों की चिंता की, हमने मंत्रालय के बजट को बढ़ाया और आज जनजातीय मंत्रालय का बजट अनेक गुना बढ़ा करके हमने आज Hours after a massive late-night explosion reduced Srinagar's Nowgam police station to rubble, the Ministry of Home Affairs on Saturday termed the tragedy an unfortunate accidental incident. In an official statement, Prashant Lokhande, Joint Secretary, Jammu and Kashmir Division MHA, stated that the blast occurred at 11:20 p.m. on November 14 inside the police station. The official explained that the Nowgam police had recently cracked a terror module based on leads obtained from a suspicious poster. During the investigation in FIR number 162/2025, officials recovered a large cache of explosive substances and chemicals which had been stored in the open area of the police station as per procedure. For the past 2 days, Lokhande said agencies involved in the probe had been processing and forwarding the recovered materials for forensic and chemical examination following standard operating protocols. Due to the volatile and sensitive nature of the seized explosives, experts were supervising the handling process continuously, he further said. However, on Friday night, the Joint Secretary said during this routine procedure, a powerful accidental explosion occurred, claiming the lives of 9 people. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians sustained injuries in the incident. According to the official, the injured were immediately rushed to the nearby hospital but for medical care. He also mentioned that the blast caused severe damage to the police station building and also impacted multiple surrounding structures, and stressed that the exact cause of the accidental detonation is under investigation and urged the public to refrain from unnecessary speculation. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief and assures all possible support to the injured, the official added. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha on Saturday paid floral tributes to the 9 people who lost their lives in an accidental blast at the Nowgam police station, which also left 32 others injured. The tribute ceremony was held at the police control room in Srinagar. Senior officials including Jammu and Kashmir Chief Secretary Atal Dulo, NIA Director General Sadanand Dade, DGP Nalin Prabhat and Lieutenant General Prashant Srivastava, GOC 15 Corps, along with officers from the Civil Administration, Police and other security agencies also paid homage to the victims. Among the deceased were 6 police personnel, SIA Inspector Israr Ahmad Shah, Selection Grade Constables Divide Mansoor Rathar and Arshid Ahmad Shah, both Crime Branch photographers, Selection Grade Constable Aijaz Afas Mir and Constables Mohammad Amin Mir and Shaukat Ahmad Bhatt from the Forensic Science Laboratory. The other victims included Naib Dishiltar Musafir, Ahmad Khan, local Chogitar, Sohail Ahmad Radar and Taylor Muhammad Shafi Pure. We'll take a short break. Keep watching. On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे।
Welcome back. Delhi Police Head Constable Than Singh, one of the first responders to the November 10 blast near the Red Fort, recounted the chaotic moments that followed the explosion. He said officers heard a loud blast while at the police station and rushed to the spot, where panic had already gripped the area. People were running for safety, several were lying injured on the ground, and nearby vehicles, CNG tanks, were continuing to explode. Singh said their immediate priority was to rescue the injured and administer first aid. He added that the police were determined to save as many lives as possible, even if it meant putting their own lives at risk. जिस वक्त धमाका हुआ, क्या हुआ था पूरा का सीक्वेंस आप बताना चाहिए, उस वक्त क्या देखा था आपने, क्या मंजर था आपके सामने? सर, मैं और अजय हम यहीं खड़े हुए थे। अजय थोड़ा इधर से निकला, मैं रोड पार करके निकला। जैसे ही मैं आगे पहुंचा तो एक आवाज आई धमाका जैसा, पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता था उसमें क्या था। हम जैसे ही भागते हुए आए तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, लोग बाग भाग रहे थे इधर से उधर, तो काफी लोग नीचे गिरे पड़े हुए थे और पटाखे धमाके होते जा रहे थे, यानी कि पटाखे की आवाज आ रही थी, क्योंकि गाड़ियों में सीएनजी थी कई जगह पर। मगर हमें डर, कई लोग कह रहे कि दूर हो जाओ, मगर हमने कहा कि नीचे लोग गिरे पड़े तो हमारा फर्ज था उन लोगों को बचाना, उन्हें फर्स्ट उपचार देना। तो हमने किसी की चिंता नहीं करी, तो चाहे धमाके आए चाहे कुछ भी आए, हमने सोचा अगर 5 लोगों की जान बचाकर हम अपनी जान अगर गवा दें तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मगर लोगों की जान बचनी चाहिए। और हमने सबसे पहले उन लोगों को उठाया और फर्स्ट उपचार के लिए उनको, चाहे रिक्शा मिला चाहे ऑटो वाले मिले, उनको बैठा के सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे कि लोगों की जान बच सके, क्योंकि हमारा कर्तव्य है लोगों की जान बचाना और उनकी सेवा करना। और हमने कोई कमी नहीं छोड़ी उस चीज के लिए। हमारा फर्ज यही था लोगों को जो भयभीत हो रखे थे उनको संभालना, उन लोगों को समझाना कि चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और पब्लिक ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमारे साथ खड़ी रही, क्योंकि जैसे हम आगे गए तो वो भी हमारे साथ आगे आए। तो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, कई लोगों की जो जान बचाई हमने। 15 से 20 लोग थे जिनको हमने गोदियों में उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। हमने किसी एम्बुलेंस का या किसी चीज का वेट नहीं किया, बस वो मंजर बहुत खतरनाक था, मैं बयान नहीं कर सकता। मगर ठीक है, भगवान ने एक शक्ति दी हमें और ताकत दी उन लोगों को हेल्प करने में, और हमने उनको। किस तरह का मंजर था, जैसे आपने कहा कि बयान नहीं कर, लेकिन फिर भी अगर देखा जो आपने, लोग, आवाजें आ रही थी, कहीं सीएनजी न फट जाए, कोई कहीं न फट जाए, और लोग पड़े हुए थे तो कोई हाथ नहीं लगा रहे, तो हमने फटाफट से उनको लोगों को उठाया, चाहे कैसे भी उठाया, चाहे हम पूरे लथपथ थे, हमें किसी चीज की चिंता नहीं थी, हमें उठाया, फटाफट लेते जाओ, उठा के फटाफट भेजते जाओ। हर ऑटो में, हर रिक्शे के अंदर हमने एक एक बंदा बैठाया। मैंने कहा इसको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ, इसको फर्स्ट उपचार दो, जिससे कि इनकी जान बच सके। और आज भगवान की दुआ से चलो हम इतना तो कहते हैं कि हमने थोड़ी बहुत लोगों की जान तो बची, जिससे कि, क्योंकि 12 मिनट के अंदर हॉस्पिटल तक आप लोगों ने जो वहाँ पे जो विक्टिम थे उनको पहुंचा दिया था हॉस्पिटल में 12 मिनट के अंदर। तो जो पहली जो कॉल हुई या जब आपने सुना धमाका, उसके बाद 12 मिनट के अंदर ही वहाँ पर पहुंच गए थे आप लोग हॉस्पिटल में? सर, हम 1 मिनट से पहले ही पहुंच गए थे वहाँ पर। धमाका हॉस्पिटल में बताते हैं कि हाँ 12 मिनट से पहले पहुंच गए लोग। और क्या कहते हैं, हमने किसी चीज का वेट नहीं किया। सबसे पहले हमने एक लेडीज निकाली उसके अंदर से, जो आग के अंदर बैठी हुई बिल्कुल वो हो रही थी। हमने सबसे पहले उसे निकाल के गोदी में उठा के बाहर निकाला, फिर उसे बैठा के सबसे पहले बैटरी रिक्शे में बैठा के सबसे पहले उसे वहां हॉस्पिटल पहुंचाया। तो हमने कोशिश करी जितने लोग मिलते गए हम उनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाते गए। हमें कोई एम्बुलेंस की, हम किसी चीज की वेट करते तो बहुत ज्यादा लेट हो जाते हम। तो हमने सबसे पहले हमारा ये दायित्व था कि लोगों को फर्स्ट उपचार के लिए पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और इसमें हमने उन्हें हॉस्पिटल सही सलामत पहुंचा दिया था। धमाके भी उड़ते, अपनी जान की भी परवाह नहीं, क्योंकि क्या पता क्या हो जाए एकदम से, कैसे धमाका दोबारा हो जाए, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई दूसरे बात तरीके से। सर धमाके तो हो रहे थे, मगर अब धमाके देखते हैं लोगों की जान देखते। हमारा फर्ज था लोगों की जान बचाना, और हमने जो वर्दी पहनी है लोगों की जान बचाने के लिए और अपनी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा करने के लिए। तो हमारा दायित्व था उन लोगों की सुरक्षा कर सके और लोगों की जान बचा सके। BJP National Spokesperson C.R. Kesavan has accused the Congress party of sidelining several great patriots for decades in an effort to solely promote the Nehru-Gandhi family. Speaking on Friday, Kesavan highlighted Prime Minister Narendra Modi's effort to honor tribal icons, noting that November 15 has been officially declared and celebrated as Janjatiya God of Divas to mark the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. He further asserted that the centre's zero-tolerance policy towards Naxalism under PM Modi has yielded significant results, reducing Naxal-affected districts from 126 nationwide to just 3. For decades, the Congress party, with their very narrow motive to glorify only the Nehru-Gandhi family,
deliberately sidelined great patriots like Bhagwan Birsa Munda ji, Baba Saheb Ambedkar ji, Netaji Bose, Sardar Patel ji, and many others. The Congress party disrespected the selfless sacrifice and disregarded the immense contribution of these great nationalists to our independence struggle. It was only after Prime Minister Narendra Modi ji took responsibility at the center. Today, on November 15th, we celebrate the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda ji. Prime Minister Modi ji ensured that November 15th was declared and celebrated as Janjatiya Gaurav Divas to honor the illustrious tribal heritage and also the heroic contribution of the tribal community towards our freedom movement. But the manner in which Prime Minister Modi ji has revived, respected and celebrated the glorious legacy of Bhagwan Birsa Munda ji is the reason why the younger generation today is not only aware, but they're also grateful and thankful to Bhagwan Birsa Munda ji and other tribal leaders who played such an important role in our freedom movement and nation building. The manner in which under Prime Minister Modi ji's leadership, Naxal terror has been combated is a very, very important reason for the transformation we've seen in tribal regions. Because of Naxal terror, development was choked in tribal areas, and after the zero tolerance to Naxal terror initiative by Prime Minister Modi ji, Naxal terror has been reduced from 26 districts across the nation to just 3. And this, like I said, transformed the development in tribal regions and has ensured roads, schools, hospitals making way into tribal regions. And not only this, the far-sighted vision and schemes of Prime Minister Modi ji, for example, the Aspirational Districts program, the PM Janman scheme have ensured, empowerment of the most vulnerable tribal groups. And another initiative which was launched last year, the PM Janjatiya Gram Utkarsh Yojana, has ensured holistic socio-development of more than 63,000 districts, tribal majority villages, 63,000 tribal majority villages across India. These are very, very commendable measures, and it was Prime Minister Modi ji who was the first Prime Minister to visit the birthplace, Ulihatu, of Bhagwan Birsa Munda ji. And if you look at the history of the Bharatiya Janata Party and the NDA, the tribal ministry was created in 1999 under the NDA led by the BJP, and Prime Minister Modi ji was very instrumental in ensuring the first woman from tribal community was made as Rashtrapati. Sharp contrast to how the Congress party has made such derogatory remarks against our first tribal woman president, and they continue to make condescending remarks. That is the mindset and mentality of the Congress party. Today, we are grateful and thank Bhagwan Birsa Munda ji and all the other leaders from the tribal community for their contribution and sacrifice and struggles to our freedom movement. And also, we take this opportunity to thank Prime Minister Narendra Modi ji for rightfully restoring their respect and remembering their legacy. A breakthrough in neuroscience and AI has emerged from Japan, where a scientist has developed a technique that can translate a person's mental images into descriptive sentences using brain scans and artificial intelligence. The study, published on November 5 in Science Advances, was led by Tomoyasu Horikawa, who noted that while earlier research could convert imagined words into text, turning complex mental visuals into language had remained a major hurdle.
Horikawa's new method called mind captioning uses AI to interpret brain activity and produce detailed descriptions of objects, scenes, actions and events along with the relationships between them. For the study, Horikawa analyzed the brain activity of 6 adults aged 22 to 27 as they watched 2,180 short soundless video clips. Large language models converted the video's captions into numerical patterns, and simpler AI decoders were trained to link those patterns with brain scan data. These decoders were then used to interpret brain activity when participants viewed or recalled new unseen videos. As the system learned, its accuracy improved substantially. Remarkably, it produced description in English even though none of the participants were native English speakers. Horikawa said the technology works without relying on the brain's language regions, suggesting potential use for people with damage to those areas. The study highlights possible applications for individuals with aphasia or ALS who face challenges in speech and language expression. We'll take another short break. Keep watching. Welcome back. India's ambassador to the United Nations, Baranvantani Harish, addressed the UNSC advocating for reforms to make the Council more representative and effective. He emphasized the need for transparency, accountability and inclusivity, highlighting India's own contributions to UN peacekeeping. He also highlighted that India seeks more transparent selection processes for subsidiary body chairs and pen holderships. This comes at a time when Pakistan holds the vice chair of the UNSC Counter-Terrorism Committee alongside France and Russia. Pakistan, currently serving as a non-permanent member for the 2025 to 2026 term, was also appointed in July as the chair of Taliban Sanctions Committee. India advocated for plain vanilla mandate and avoid Christmas tree mandates, increase resources and TCC/PCC input with expansion of peacekeeping mandates matched by a proportionate increase in resources. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.